No, that regarding the tables only I was having. Mm-hmm. Didn't got that table names. Okay. So yeah, So the third that assignment, were you able to do? You guys, anyone is uh, I was trying, but I'll complete today. I got the table now. okay. So the The idea server is problem clear, was, right? yeah, yes. आशीष आपको कुछ डाउट है प्लीज Maybe I still go. सॉरी No doubts. I will also do today. ओके यू मीन आपको रिपीट करना है ना रिवाइज करना है रिवीजन करना है लेक्चर देखूंगा ओके नॉट एन इशू चलेगा सो टुडे आई थिंक इवेंट्स इन क्लासिकल रिपोर्ट्स आर क्लियर फॉर यू गाइस एंड सिलेक्शन स्क्रीन क्रिएट करके एनी प्रोग्राम क्रिएट किया Uh, no, I'll do today. Okay, so you guys want me to repeat the same today or shall I move to the next topic? We can move to the next topic. Ashish, आपको? Yes, we can all do it. Because recordings are anyway there, you can go back view anytime. Yes. Okay, so I was just discussing, let me share my screen. Can you see? Yes. Okay, so as we have discussed the classical reports, so events at selection screen, initialization at selection screen on start of selection, every events are meant for some particular operation, right? So when I say, just you guys see my still slide or SAP Slide, screen? slide up. Acha, the system is not connecting or what? Any issue with the system? Is it resolved? I think Sarvesh, you are facing the issue, Yes, right? I was having issue. Even me, I'm not able to access the system. So did you check with Supriya? Yes. Yes, I have put I sent the screenshot on that. Yes, yes. Still Let getting me error, just but let. Is the system? Is this screen open for you? SAP? no. It's not open. Okay, just give That me a moment. And WSA, that error is coming. Resource yes, temporarily allowed. yes, that is connection error. Okay, even I'm not able to access the screen. For me, also it's showing the same thing. Okay, then so we can discuss the, I think without screen it's not easier, it's difficult for me to explain. But then I would see, we can still discuss on the same events if you guys want to go through back again. Or you want to discuss something on selection screen. Or ALVs also I can explain you, but like it's again I have to explain when we practically do. Yes, practically it's important. Yes, again I'll have to spend more time same on it. We can discuss on the assignment that we gave you. You guys can ask your questions. So what are the tables that you guys are using for your assignment? That LFA1 and that one only. LFB1, LFBK is LFA1. what you Yeah. are using. 3 tables. And Ashish, आपने आप वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया तो मुझे टाइम नहीं मिला okay. ऐसे करूँगा। So is it clear about the selection screen? The C, the basic idea, we create a selection screen. So something like this box we will see. Whenever you get, so suppose I can ask you some now question that how all these things that we are doing, but who will tell us to do all these things? This is the basic question, right? In actual project system, project scenario, who will tell you functional all people this? Okay, yes, exactly. Functional will tell you. But what is the way that functional will tell you to do this, that?
there is one document that is there, which is called functional specifications. Okay, so that is the document inside which you will get all your requirements, all your designs, all your tables, all your like how the relation between tables, what are the relation you have to build, and what is the data you have to go to what many tables, what is the key common field in all these tables, how do you fetch data, what data you have to fetch, what are the filtering scenarios. All these things will be specified in that functional specification document when you get it. So inside that, he will not tell you that create a selection screen like this and like this and like that, right? So he will give you in that functional specification, you will have a image like this, you will have a screenshots like this. Upon that only you have to create. So now I gave you a screenshot like this. So how will you create a selection screen? Now suppose I'll just say I'll give a screenshot this way. So how will you create? You tell me what is a selection screen. Was S underscore BUJKRS is the field. So how will you declare that field? Using the select options only. Okay. And the next display and non-display are the Radio button. check boxes. Oh, sorry, check boxes. These two are the check boxes. Yes, And yes. S underscore bookers is it is since it is from to, so it will be a select option. So in this screen, if you see, there is first one box, and inside that check boxes are in the different selection screen. Okay. So how will be your selection screen? So here you can just see that is what it is explained here. Like first we'll create a selection screen which is with no like name for this that box, because title text is not given in the first line. So that is because here also in the first outer box there is no title text for that name. So that is why we did not take title text. In the next select option, yes underscore bookers, that is what your select options from to. Okay. Type for V1, why did they give? V1 is a types T001 bookers. And in our cases, what did we discuss? If you want to declare any S underscore bookers, type T001 bookers also you can give for. But you have to give tables may T001, you have to define it first. Okay. So after that, in select options, once it is done, there is one more box after that, which is select any one checkbox. That is the name for your selection box, right? So you how will you create a selection box again? Selection screen, begin of block B with the frame title text. In text text 001, when you double click, you'll have to give that name here. Select any one checkbox like this. Then inside that, your checkboxes parameter display P underscore DIS as a checkbox and P underscore no display no non-DIS as a checkbox. Then you'll have to end both of the selection screen A, selection screen B. Okay. Yes. Are you able to recall, Ashish? First, we have to declare the T001 tables from bookers, and then we have to Your declare voice is selections. very low, actually, or it's for me only. Hello? Yes, now Huh. are you able to hear me? Yes. So first, we need to declare T001 from table. From that, we Yes. have to select हाँ, bookers. अगर आप T00 tables में T001 declare कर रहे हो, then the data V1 is not required. ये इसकी जरूरत नहीं है. You can directly give S underscore bookers for T001 bookers. ये V1 की जगह पे आप डायरेक्टली T001 bookers दे सकते हो. अगर आप टेबल्स में T001 डिक्लेयर करते हो. अगर आप नहीं कर रहे हो, then you'll have to give like this. Okay, these are the basic two ways, but generally what we follow is जो tables में declare करने वाला scenario है ना, वो ही हम लोग generally follow करते हैं. And after selection screen, this one begin of block, ये second वाला select any checkbox के लिए है. And two parameters are your checkboxes and ending the select option.
आपको फंक्शनल सिर्फ ये बॉक्स देगा, ऐसा स्क्रीनशॉट देगा डॉक्यूमेंट के अंदर. यू विल हैव टू क्रिएट बाय योरसेल्फ. उसके ऊपर आपको समझना है कि क्या पैरामीटर है, कौन सा फील्ड चेक बॉक्स है, कौन सा फील्ड रेडियो बटन है. एंड वन से यहाँ पे बॉक्स दिया है तो चेक बॉक्सेस रेडियो बटन दिया है तो वहाँ पे वो लोग मेंशन करते हैं रेडियो बटन विथ नेम. और नेमिंग भी, सबकी नेमिंग्स भी यू हैव टू गिव द सेम नेम्स वॉट एवर यू गेट इन दैट डॉक्यूमेंट. आप अपने मन से कुछ भी नहीं दे सकते हो. अगर यहाँ पे सेलेक्ट एनी वन चेक बॉक्स लिखा है तो यू विल गिव द सेम नेम ओनली. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, बिजनेस के पास जाता है यूज करने के लिए. एंड बिजनेस पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ एसएपी. दे आर लाइक the data entry people, understand, they don't know anything. They have trained for some work and they will do only that. तो आपको जो उनको जो जो दिख रहा है बस डेटा एंट्री करते जाएंगे लाइक दैट. सो उनको कुछ समझ नहीं आता है. दैट इज व्हाई वी डोंट यूज आवर ब्रेन्स इन हियर. जो दिया है इमेज डायरेक्ट सेम हम लोग रेप्लिकेट करते हैं. यहाँ पे कुछ डाउट है आपको, क्या है लिखना है, कैसे लिखना है? सर्वेश, कैन यू चेक इज इट अप और नॉट? No, I've checked just now only. ओके. सो इसके ऊपर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. एंड आई सजेस्ट यूज दिस यूजिंग फंक्शन मॉड्यूल. फंक्शन मॉड्यूल में कुछ डाउट है आशीष? हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, स्टेप्स टू क्रिएट अ फंक्शन मॉड्यूल. फंक्शन मॉडल मेरे फंक्शन मॉडल में नहीं है ना? वन सेकेंड ना, सुप्रिया इज कॉलिंग. हेलो हेलो. हाँ सुप्रिया, आई थिंक सिस्टम चालू हो रहा है. देयर इज सम कनेक्शन इशू रहता है. हाँ हाँ, द सेम रिजर्वेशन जो रेज किया है ना इशू वही है. इशू क्या हुआ है, चेक किया क्या आपने? तो सॉल्व कौन करेगा फिर? अब उनको चलिए ठीक है. आपका अगर हो उनसे कुछ रिप्लाई आता है तो एक बार व्हाट्सएप पे अपडेट कर दो. हेलो. यस. ओके. Okay, so we were discussing about function groups, and then we have the classical reports, interactive reports, ALV report. Today I was thought of discussing ALV reports. But before we go to, we have the same events in ALV. Generally, you can ask me questions like ये events का मतलब क्या है? It is only when you require it. It is not necessary. Only this, except the start of selection, हम लोग कोई भी event ऐसे ही use नहीं कर सकते. And there is one start of selection is compulsory. हम लोग सारे programs में from now on we will use. And उसके अलावा जो event regularly use होता है, that is at selection screen on. मतलब ये F4 सर्च हेल्प के लिए जो हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर दैट मैग्नीफायर इज देयर आफ्टर Yes. एवरी फील्ड, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं. बाकी दीज आर लाइक नाउ एंड देन व्हेनेवर वी हैव दैट रिक्वायरमेंट टाइप ऑफ अ थिंग. सो अभी के लिए इतना कंफ्यूज्ड मत हो टू अंडरस्टैंड कि ये चाहिए ही चाहिए. इट्स नॉट दैट नेसेसरी, बट आपको इसका नॉलेज होना इज इम्पोर्टेंट कि कैसे एवरी पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम कब यू एग्जीक्यूट होता है एंड व्हाट टाइम इंस्टेंट दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड एंड हाउ कैन यू हैंडल योर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स. ऐसा है. सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है that are very short, but again that is the only thing required. उसके अलावा कुछ बड़ा डिस्क्रिप्शंस कुछ नहीं चाहिए बेसिकली.
basic, but start of selection and end of हम्म, selection, top, these are the ones, these are required, no, in यस, this report. वही मैं बोल रही हूँ. द Uh, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन इज मैंडेटरी, we use it. yes, And end end of, of selection also we hardly use, not much time, we don't use all the time, but but as I said, जब भी हम लोग आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, द आउटपुट लॉजिक वी विल राइट इन एंड ऑफ सिलेक्शन. ऑल द सेलेक्ट वेरीज हम लोग स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में लिखते हैं, लूप्स अपना स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में लिखते हैं. लेकिन जब एंड ऑफ सिलेक्ट ये आता है, मतलब आउटपुट दिखाने की बात आती है, जब राइट स्टेटमेंट रहता है ना, दैट वी विल राइट इन एंड ऑफ सिलेक्शन. दैट इज, इट्स लाइक जस्ट एन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होता है, और but the कुछ नहीं. output will give, will not give, no, then, or it's not mandatory. इट्स नॉट मैंडेटरी. अगर आप Okay, जैसे हम लोग अभी तक लिखते आ रहे हैं वही भी चलता है. एंड okay, यूजिंग एंड ऑफ सिलेक्शन ऑल्सो वर्क्स. yes, लेकिन ये स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन जरूरी है, बिकॉज आपको वो डिफरेंस में दिखा सकती थी, बिफोर विदाउट यूजिंग स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन और विथ यूजिंग स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, क्या बेसिक डिफरेंस आपको पता चलेगा सिस्टम में करके. तो दैट we could have shown you, but the कल जब आएगा सिस्टम we can check. there is one program यहाँ पे, हम लोग we can discuss that. सो आपको क्या दिख रहा है, मतलब जस्ट गो थ्रू द कोड लाइंस, और यहाँ पे जो ये स्क्रीन दिया है उसके हिसाब से सिलेक्शन स्क्रीन इन्होंने बनाया है. कैन यू जस्ट गो लाइन बाय लाइन, आपको कुछ यहाँ पे अलग दिख रहा है क्या? और यहाँ पे इन लोगों ने इनिशियलाइजेशन करके एक यूज किया हुआ है. और यहाँ पे देखो, इन लोगों को चाहिए सिलेक्शन स्क्रीन में s_vbln और कुछ वैल्यूज दिया है उन्होंने, 4969, 4980 एंड 4990 एंड 4975, 4985. तो वो सारे वैल्यूज हाउ विल यू गिव, आपको ऐसा दिया है अभी. तो यहाँ पे कोड्स दिख रहा है आपको. yes, वैल्यूज अपेंड किए हैं ना टेबल में. एग्जैक्टली exactly. और टेबल किधर है, यहाँ पर कौन सा टेबल है देखो. VBLN. इज दैट अ VBAK, टेबल? VBAK है ना, VBAK VB. किधर है वीबीए के टेबल? डेटा टाइप VBAK. हाँ, डेटा टाइप वीबीए के ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने अपेंड किस में किया है, अपेंड s_vbln पे किया है. एंड s_vbln इज व्हाट, s_vbln इज योर सेलेक्ट selection, ऑप्शंस. आप थर्ड लाइन देखोगे ना, s_vbln फॉर v1 दिया है, दैट इज योर सेलेक्ट ऑप्शंस, दैट इज योर इनपुट. तो उन्होंने उस पे अपेंड किया है. और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, अगर आपको बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज किसी फील्ड में देने ही है, तो आप कहाँ पे दे दोगे, वो इनिशियलाइजेशन में दोगे. एज वी हैड डिस्कस दैट डे अर्लियर, कॉन्स्टेंट्स देना रहता है और कुछ डेटा डिक्लेयर करके फिर उसका वैल्यू सेट करते हैं, दैट ऑल्सो यू डू इन इनिशियलाइजेशन. तो अभी इन्होंने क्या किया इनिशियलाइजेशन में, जब भी आप सेलेक्ट ऑप्शन में कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हो इंटरनली, बैकएंड में क्या होता है, वो सेलेक्ट ऑप्शन एक टेबल की तरह एक्ट करता है. because when I create a s_vbln as a select option, तो बैकएंड में हमको स्क्रीन लेवल पर तो वी जस्ट सी देयर दिस इज एन इनपुट फ्रॉम एंड टू रेंज दिया हुआ है. बट बैकएंड में क्या होता है, दैट s_vbln इज आल्सो अ टेबल, जो डेटा मल्टीपल डेटा स्टोर करता है. द सेम, अगर आपको वो टेबल में कुछ डेटा अपेंड करना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. सी फ्रॉम हियर, s_vbln, ये वाला जो प्रोसीजर है. So you will have to follow this procedure. आपको तभी जाके आइडिया आएगा, मतलब वैल्यूज आएगा कि कैसे एग्जैक्टली काम करता है. s_vbln साइन आएगा, साइन इज इक्वल टू आई देना है. एंड बिटवीन, बीटी मतलब बिटवीन आता है, इक्वल टू मतलब इक्वल आता है, राइट. EQ, बिटवीन क्यों दे रहे, बिकॉज वी आर गिविंग वैल्यू बोथ टू द लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू. लो में 4969 दिया है, दिस इज योर फर्स्ट लो वैल्यू, जो यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे दिया हुआ है, राइट.
This is your 4969 is your first low value, and for this line two value is 4975 जो हाई पे उन्होंने दिया है. इसको एक बार अपेंड कर दिया एस अंडरस्कोर वीबीएलएन में, फिर क्लियर किया है. एज आई टोल्ड यू, आफ्टर अपेंड आपको क्लियर लिखना ही है, बिकॉज वो वैल्यूज फिर क्लियर नहीं होंगे. फिर एस अंडरस्कोर वीबीएल में सेम बिटवीन क्या आएगा, 4980 4985. नेक्स्ट लाइन 4980 4985 आना चाहिए, इधर 88 लिखा हुआ है. ठीक है, right? So after that, then you will append this also. In the end, what is that? It is equal to, मतलब यहाँ पे सिर्फ 4990 इतना ही है, यहाँ from to range नहीं है. That is why we did not give BT. Now we have only given equal to 4990. Correct? So ये selection screen ऐसा आपको दिया है, सोचो तो how will you do? And all this इन्होंने initialization में लिखा हुआ है. Event दिख रहा है आपको इधर, यहाँ पे Yes. there is an initialization event. Inside that they have written it. Clear. एंड अगर यहाँ पे एक और पॉइंट मिसिंग है, यहाँ पे चेक बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है. सो बेसिकली वेन एवर यू डिक्लेयर दोनों चेक बॉक्सेस ब्लैंक रहते हैं. सो नाउ यू वांट टू चेक दैट चेक बॉक्स. कहाँ कैसे करोगे, कहाँ करोगे, टेल मी. ये ऊपर वाला तो हो गया, अभी नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दैट चेक बॉक्स. This one, that P underscore DIS has a checkbox. That That is is that you have to set. How will you set it now? उसको फिर सेलेक्ट कैसे करोगे, उसको राइट ऑप्शन उधर कैसे आएगा, और कहाँ पे लिखोगे वो पार्ट. in that headings and list. It is there, or What headings? that Events. we write in that for the selection we write that heading, no, that in that it will get, or अच्छा, your text elements you are telling? yes, in that, or No, there only the namings you can do. okay. After that, any selection, data, everything you cannot do that. There is only fields namings. Text elements are only the naming conventions. Okay. Functionality wise, you cannot define it there. So where will you define? So you have, this is the variable you have to set. Parameter P underscore DIS is the first checkbox name. Now you have to make it X. P underscore DIS is equals to X you have to pass, then that will be selected. So where will, now you know that you have to do X to that. So where will you do that now? If you can go through these events and see. Add selection, no, that is Yes, you can use it in initialization only. The same initialization में आप लिख सकते हो, because by default आप selection screen open होने से पहले you are making it as deselected. अगर आपको selection screen open होने के बाद select करना है तो where will you write? आपको लिखना तो P underscore DIS is equals to X लिखना है. Now I'll say अभी आपको पहले selection screen दिखेगा तब, then only you want to make it as X. तो अभी आपको, आप किधर लिखोगे?
before displaying the selection screen only, you have to set it to X. Then you have to set, do it in initialization. Similarly, जो इन्होंने SVBLN के लिए किया है, जब भी आप selection screen खुलेगा, ये data आपको by default उधर दिखेगा ही, right? So everything that is seen on the selection screen before you do any operation, that you'll have to write in selection initialization. अगर आपको अभी आपको सिलेक्शन स्क्रीन की खुलेगा, व्हेन यू सी सिलेक्शन स्क्रीन, तब जाके आपको दिखने सेलेक्ट करना है, तब जाके आपको कुछ करना है, देन यू हैव टू राइट, कहाँ पे लिखोगे आप, एट सिलेक्शन स्क्रीन, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, राइट? So you'll have to, once the selection screen is out, then you have to do any operations here. Clear? Guys, system is still not up. आपको अगर, if we can stop here for today's session, we can stop and you guys can practice on the same. Otherwise, आपको continue कुछ doubts वगैरह discuss करना है तो we can still be there. No, it's practically only part. So Yes, it's better. The more practical you yes, guys do, it's more perfect for you. yes, yes. So that is why even now I'm not going for theoretical But explanation. when will the server available? That Uh, she'll inform us, I guess. I have told okay, her to just drop a update on WhatsApp whenever this okay. comes up. But Okay. today it's there PPT is or I'm not sure. You guys have to keep on checking. That okay. is the option. this क्या हो PPT गया? is ending on 75th slide. No? Okay. After that, what we are going to run? I have only made till that. We'll do. There is so many other topics. It's not only 76. It's still the reports only we are still looking at. There's so many other topics we still have to discuss on. If you want, on first May we can try for a lecture. What? But it's a holiday. No? On first May there is a holiday. We will have a session on that day. We will not have holiday. We can have a flexibility in time, but session will be there for sure. Practically, when you guys are working, like creating anything, any statements, anything, कुछ issues face हो रहे हैं, I think आशीष आपको syntaxes पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा. That will be done only when आप बहुत ज़्यादा programs create करोगे. Daily at least एक simple data declaration करो, structure create करो, internal tables declare करो, select query और write statements. इतना बस करो daily एक program. And you can even take a single table and for all entries करने की भी जरूरत नहीं if you do that. तो आपका एक बार हाथ बैठ जाएगा. Then you can use 2 tables. मैंने वो आपने प्रोग्राम दिया था ना, वो पूरा है ना हाँ. टाइप करके लिखा है पहले वाला. मतलब नहीं हाँ. क्या कॉपी पेस्ट नहीं हाँ. किया कुछ उसके ऊपर. हाँ, correct, which is correct. सिंटेक्स के ऊपर. हाँ, correct. इसके वजह से Which is, मुझे अभी हाँ, मतलब लॉजिक सबको इशू आता है एक्चुअली व्हेन वी लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम. एज आई से ऑल द टाइम, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इट लुक्स एवरीथिंग सो इजी, सब अच्छा मतलब करेक्ट लग रहा है, बट व्हेन यू गो स्टार्ट राइट बाय योरसेल्फ, आपको प्रॉब्लम्स दिखते हैं. प्रोग्राम इज ऑल द लैंग्वेजेस आर लाइक दैट. अंडरस्टैंडिंग वाइज कोई समझा रहा है तो इट लुक्स सो इजी, बट आप करते बैठोगे ना तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. That is why I keep on telling, practice करते हो. इसकी स्लाइड्स के अंदर there are so many assignments. आप बस पढ़ो क्या हो रहा है वो, यू ऑन दैट. यहाँ पे आई थिंक फंक्शन मॉड्यूल्स का एक एग्जांपल है, देखो. बेस्ड ऑन द गिवन कस्टमर नंबर्स, customer name, display the customer numbers, name, sales document number, document date, item number, material description, quantity, unit of measurement, net price by a function module.
देखो ये वाला सेकेंड वाला इट्स बेस्ट फॉर यू गाइस, यू कैन डू दिस वन. Yes. And based on the given vendor numbers, display the vendor numbers, names, purchasing document numbers. हाँ, this is तो very easy, normal वाला है हमारा ये. And this is using function model. आप जो भी ये लिख रहे हो ना, आप डायरेक्टली जाके फंक्शन मॉडल पे लिखो ना, एंड आपका प्रोग्राम जनरली इन एक्चुअल सिनेरियोज वी डू लाइक दैट ओनली. बिकॉज कैसे होता है ना, वेन एवर यू राइट, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट अदर कंपनीज, बट जनरली जो एमएनसीज वगैरह रहते हैं, व्हेन वी राइट एनी प्रोग्राम्स, each and every line of your code gets like reviewed by your managers. So whenever you don't write in a systematic manner, that will be not a good remark on you. Because first time आपको वो समझा देंगे, नहीं नहीं हमारा ये सब प्रोसीजर है, दिस इज द फॉर्मेट वी फॉलो एज अ प्रोजेक्ट कल्चर, आपको ऐसा ही फॉलो करना है. दे विल टेल यू इन द फर्स्ट टाइम, और दे विल गिव यू एनी रेफरेंस प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड हाउ दे फॉलो दीज स्टेप्स. उसके ऊपर अगर आप फॉलो करके लिखते हो प्रॉपरली तो अच्छा है. सो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट टीएस वगैरह बनेंगे, यू विल गेट अप्रूवल फॉर दैट. वो सब बहुत लंबा प्रोसेस है. इट्स नॉट ओनली राइटिंग कोड्स, इट्स हाउ यू राइट एंड हाउ एफिशिएंट यू राइट. वो भी काम करते. इट्स नॉट लाइक हमले कुछ कर, क्लाइंट का काम हो रहा है ना बस, ऐसा नहीं चलता है. बिकॉज टुडे कंपनीज आर लुकिंग लाइक क्लाइंट का काम भी होना चाहिए, योर ओवरऑल डेवलपमेंट शुड ऑल्सो हैपन. That is why they have these like all setted rules that कि ऐसे ही follow करना है. And that is again project wise अलग अलग रहता है, differ होता है. सब लोग अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं, बट इट्स बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड देम एंड फॉलो द सेम स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स. कोड तो अंदर सेम ही रहेगा, लाइंस ऑफ कोड तो सेम ही रहेंगे. इट्स जस्ट दैट कि कहाँ पे क्या लिखना है, वही बस. लॉजिक तो सेम ही रहेगा, सेलेक्ट क्वेरी तो सेम ही रहेगा, क्या कहाँ से कौन से टेबल में क्या सेलेक्ट करना सेम ही रहेगा, बट कैसे फॉर्मेट वाइज कैसे लिखना है बस उतना ही डिफर होगा. ओके गाइस, कुछ है तो वी Yes. कैन स्टे बैक, अदरवाइज वी कैन एंड फॉर टुडे. सो शैल वी? Yes. Yes. ओके देन आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस. आज तो टाइम मिल गया, आई थिंक हाफ एन आवर ओनली. यू गाइस कैन प्रैक्टिस. फिर बताओ वो Server सेकेंड वाला फंक्शन मॉड्यूल वाला करो. ऐसा आई टेल यू, जो फंक्शन मॉडल वाला दिखाया ना मैंने, EKPO, सॉरी दिस वन, VBAP एंड वो समथिंग, उसका करो. दैट विल बी अ गुड एग्जांपल. KNA1 VBAK VBAP MAKT वाला. आपको कॉमन फील्ड चाहिए तो आई कैन गिव यू. स्लाइड 60 पे जो लिखा हुआ है. ठीक है, एक बार ऐसा बस चलो ठीक हो जाए. सॉरी, हाँ हाँ बराबर. इट्स नो पॉइंट नाउ गिविंग. एक बार सिस्टम अप हो जाएगा ना, देन वी कैन बता सकते. Yes. फाइन. Okay. So I'll stop the recording.